क्या आतंकवाद खत्म हो गया है? वॉर ऑन टेरर क्या खत्म हुआ? इस्लाम की जिहादी जिद क्या समाप्त हो गई? ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस साल 9/11 की घटना आई गई सी थी। 21 साल पुरानी न्यूयॉर्क में वर्ल्ड टावर पर 11 सितंबर की आतंकी हमले की घटना पर वैसी बातें नहीं हुई जैसे पहले हुआ करती थी। इसका अर्थ है अमेरिका वॉर ऑन टेरर से बाहर निकल आया है। और हैज इट? पिछले साल 31 अगस्त को अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं के लौटने के वक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया था। कहा था वे लड़ाई हमेशा के लिए बढ़ाए नहीं रखेंगे। आई वॉज नॉट गोइंग टू एक्सटेंड दिस फॉरएवर वॉर। तभी सवाल है, क्या दुनिया अब आतंकवाद के खतरे में जीती हुई नहीं है? नमस्ते, मैं श्रुति व्यास। 21 साल पहले सितंबर के महीने में दुनिया ठहर सी गई थी, सदमे में आ गई थी। महीनों सालों लगातार 11 सितंबर 2001 के वे फोटो वे वीडियो दुनिया ने देखे जिसे देख सबने माना हम सुरक्षित नहीं। न्यूयॉर्क के टावरों में घुसे हवाई जहाजों और गिरते टावरों से पूरी दुनिया में फियर बना। सबने अपने को खतरे में पाया, असुरक्षित, वल्नरेबल माना। Vulnerable to the idea of taking flights, vulnerable to any bearded man wearing a skull cap. दुनिया भर में मुसलमानों को शक और नफरत की निगाहों से देखे जाने लगा। They were eyed with suspicion, them versus us, them and us. We all became vulnerable to vulnerability that the word terrorism posed and generated. और एक नई जंग शुरू हुई। पूरी दुनिया in a sweep was sucked into a new war, the war against terrorism, against Islam and its radicalization. मगर इस रविवार को न्यूयॉर्क में उस घटना की बरसी के माहौल से मुझे लगा, has America found its closure to 9/11? पिछले साल काबुल पर तालिबानी कब्जे के साथ जो भगदड़ मची और राष्ट्रपति बाइडेन ने जो कहा, तो वह अमेरिका की बदली हुई नीति की शुरुआत थी। उसामा बिन लादेन को पहले मारा जा चुका था। इस साल ड्रोन से अमेरिका ने जवारी को भी मार गिराया। अमेरिका में ये नई सोच बनी है कि अमेरिकी सैनिक कुर्बानी के लिए नहीं, सैटेलाइट और ड्रोन मिसाइल की नई तकनीक बहुत है लड़ाई के लिए। अमेरिका इंटरनली अपने को सुरक्षित बनाए हुए हैं, तो आतंकवाद के बाहरी खतरे से निपटने के लिए उसके पास तकनीक है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा हुआ है कि the air and drone strikes would remain an option for dealing with any resurgent terrorist challenge emerging or emanating from Afghanistan. As such, the recent killing of Ayman al-Zawahiri happened through a drone attack. Then to deal with the ever so growing ISIS, American forces continue to remain in Syria and Iraq, wherein the American president also recently sent a military contingent of 500 back to Somalia. इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे कि अमेरिका के लिए आतंकवाद पहले जैसा खतरा नहीं है, वह सेल्फ कॉन्फिडेंस में है, मगर दुनिया के लिए तो है। खुद अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ते हुए हैं। Terror groups have proliferated across the globe, killing more than 900,000 people annually, including more than 329,000 civilians. Yes, 21 years later, the legacy endures. आतंकवाद का खतरा है और बढ़ता हुआ है। The war rages. And for now, maybe those hard-hitting, shattering attacks may have come down, but small flare-ups are resonating around us. हालांकि पिछले 20 सालों में the dynamics बदल चुके हैं। America continues to lead the war in terror, along with dealing a war that is raging in its own land. In a PW research this year, prior to the US withdrawal of forces from Afghanistan and the subsequent Taliban takeover of the country, a somewhat larger share of adults, nearly 35%, said that domestic terrorism was a very big national problem. और यह भी फैक्ट है कि हाल के सालों में दुनिया की दशा और दिशा भी बदली है। वर्ल्ड ऑर्डर के डायनामिक्स बदले हैं।
For there have been some revolting changes in the dynamics of the America in these 20 years, having lost its shine over being hegemonic. China and Russia, who were once standing shoulder to shoulder with America in this fight against terrorism, are at loggerheads with them. Its own allies, the institutions, are wary of the USA. They're getting indifferent towards keeping and making America's priority as their own priority. With rampaging economy, a raging pandemic, priorities have indeed shifted. And then the persistent problem of overly ambitious Russia, who indirectly through Ukraine is at war with the Western countries. We can say we are facing a Cold War of our times. सन 2005 के अपनी शुरुआती भाषण में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा था, The best hope for peace in our world is the expansion of freedom in all the world. America's vital interests and our deepest belief are now at one. George Bush did not foresee then, but today his country is battling, debating, and counter-reflecting upon its own deepest beliefs. ऐसे ही बराक ओबामा ने भी अमेरिका के जलवे के भरोसे में दुनिया को लैंग्वेज ऑफ लिबरल इंटरनेशनलिज्म से समझाया, कहा कि द वर्ल्ड वांट चेंज. He called for all countries to have the same priorities as America, but most other countries persisted in not viewing their interests as identical with America's. Well, Donald Trump ने अमेरिका के गुब्बारे को कई तरह से पिचका दिया, politically, morally और दुनिया के चौकीदार के नाते. He pinned the bubble. Even though he failed to end the wars that began after 9/11, but he vehemently stripped of the idealistic wrapper of his predecessors. The attention to the war on terrorism was diverted and tossed it aside. Rather, he stirred the mood inwards. And as a result, America, that was once united in grief and in vengeance, in a spirit of sadness and patriotism, standing in support with its leader over wars in Afghanistan and Iraq, quickly became sour and bitter. जो हो, आतंकवाद का पहले जैसा खतरा लोगों के दिल दिमाग में नहीं है. अमेरिका और यूरोप के देशों में भी the threat of terrorism does not shake vulnerability or fear anymore as it once did. What is rippling the states is the deep polarization that is getting deeper in each passing day. और अमेरिका अब लड़ते हुए नहीं है, वह अपने घरेलू मसलों में फंसा हुआ है. उसके बनाए वैक्यूम को चीन भरता हुआ है, and they are upping up their ante. China saw the withdrawal from Afghanistan as their rise and the decline of America. Indeed, China is rising to a fading America, taking on the battle for becoming hegemonic. और आतंकवाद का जो सवाल है, वह पहले भी पश्चिम एशिया से खाद पानी पाते हुए था और आज भी वही फर्टाइल ग्राउंड फॉर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है. पश्चिम एशिया और उसके असर के अफ्रीकी देशों में अल कायदा एंड द आइडियोलॉजी इट promulgates remains strong. And it will continue for years and perhaps decades to come. We will have to continue to live with the risk of large-scale terrorist violence. In many ways, 9/11 and the subsequent war on terror reshaped our daily life, our world affairs. It transformed our perception on war and peace. Yes, war on terrorism ने दुनिया की और देशों की राजनीति को बदला. उसने उथल-पुथल बनवाई. तय माने कि इसे लगातार भुगतना होगा, लड़ते रहना होगा. We will spend our time fighting and more fighting. मगर इंसानों को क्योंकि केवल इसी से नहीं लड़ना है, तानाशाही ताकतों से लड़ना है, जलवायु परिवर्तन से लड़ना है, महामारी और बीमारियों से लड़ना है. On top of it, the territorial wars, the domestic wars, and the likely scenario of a Cold War coming between America and China, clash of civilization, the clash of ideologies की चुनौतियां तो है. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मानव समाज के जीवन का रूटीन है, तो उसकी नीति भी. आज के लिए बस इतना ही. Thank you for listening. Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.